आवह पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् 2.13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति 2.20 न ज्रायते म्रियते वा कश्चित् नैनं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 2.44 भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादो नय विधीयते 3.27 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते 4.2 एवं परम्परा प्राप्तम् एवं राजऋषिविदुः सकाले नेह महता योगे नष्टपरन्तप 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानी तत्त्वदर्शनः 5.22 यहि संस्पर्शभोगा दुःखयोनेव एव ते आद्यत्वन्त कौन्तेय न ते रमते बुधा 5.29 भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्यते 6.20 6.47 योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मताः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. So there are few shlokas only for the memorization in the first unit of Gita. There are just very few shlokas here. So we thought to start every time by recitation of the shloka, and you will see the miracle. At the end of the 6 units, when the shloka test comes, if you just listen this shlokas very carefully, you will have the shlokas memorized automatically. You don't have to put any special efforts if we just regularly recite. Okay. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Welcome everyone for today's Bhakti Shastri session. So, just a quick recap of yesterday's class. So, we request devotees to quickly share certain points which you feel that were striking points or from Prabhupada's purport or anywhere. Yesterday's discussion. You can any sequence you can unmute yourself and speak. This Yes, is a so yesterday we discussed about the knowledge. Like knowledge means knowing of matter, spirit, and knowledge and knower of both. Yeah. So Arjuna, Krishna is telling Arjuna that you appear to be intelligent man, but you are not intelligent only. You are thinking from a political perspective, social perspective, but the real knowledge means the knowledge of body and soul. All other knowledge, all the academic and social progress which person is doing, he said that is not so much helpful.
But the real knowledge means the knowledge of body and soul. Yes, Prabhu. Thank you. Anyone else? Guruji, we learned about means who is a learned man, means one who knows this knowledge and one who doesn't lament for the loss of the body. And then we also discussed next point of that there will be means there was no time that you didn't exist, I didn't exist, Krishna is telling. And with context to this, we read Prabhupada per defeating Mayavadis. Yeah, so Prabhupada quickly took out. See, Mayavadi people clearly say that there was one, like they give very famous example of a paper. Mayavadis, they give a very famous example of a paper. If you take a piece of newspaper and tear it into 100 parts, then it will become 100 parts. And then again you tear it into 100 parts, it will become more 100 parts. But then they say the original has gone away. The original has gone away only. So, but this is the material calculation. This is not the spiritual calculation. Spiritual calculation is Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamuchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Ishopnishad invocation says that is the Purna. No matter how many Purna you take out from that Purna, still the Purna remains. So 1 minus 1 is 1. 1 plus 1 is 1. 1 plus infinity is 1. 1 minus infinity is 1. 1 divided by infinity is 1. Means you see that is the power of spiritual mathematics in case of Krishna consciousness. So yes, Prabhu. Any other point? Guruji, Guruji, in case of Yes, Rohit Prabhu. Sorry, we are not able to hear you, Rohit Prabhu. I think your microphone is not working. yeah, now am I audible? Yeah. So like we also hear that some pain we just need to tolerate, and for that we give the example of leech also. Yeah. There are certain situations in life that which cannot be cured has to be endured. Something which we cannot cure. Then like there are certain disabilities in life of people. Somebody is born blind only. Okay, if we can work upon removing, change the eye and all, but somebody is given certain type of body makeup and all, we cannot change it. We have to endure it. No problem. Just go on. Okay, thank you, Prabhu. Any other example? Any other member? Yes, Bhavi, you mentioned that same example that we should tolerate the inconveniences on bodily platform also, on relatives level also, so that you should not deviate from your prescribed duty. Yeah, so Krishna is telling Arjun, you are worried about the bodies of Bhishma and Drona, but they are old people anyways. They are going to get new bodies tomorrow. It is good news, na? If your laptop or mobile version gets upgraded to a better version, then you should be happy. Hari bol, my like sometimes in a sleeper coach people go, and then the message comes, you are upgraded to first AC. So devotees don't feel happy. Devotees feel Hari bol. I lost association with the devotees, but in general we are happy. Hari bol, it's upgradation. So he said we should not worry too much about the bodies of Drona and Bhishma and all other thing. They are going to get better bodies. Yes, Prabhu. Thank you. Any other point? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, bro. Prabhuji, we also discussed that the real problems of life that cannot be solved by the academic knowledge, scholarship, and high position, Yeah. and not even by the wealth. Yes. Yeah, so many countries have so much amount of wealth. Big countries having huge wealth. But the same problems continue everywhere. Like just I was talking to one devotee recently. He was in some other country. I said, Arey, it looks like India only, this country. So he said, yes, Projan, there is nothing difference much. Same problems are continuing. Rather, he said Western countries have much more Adi Bhautik, Adi Devik kleshas also. Means comparatively, the climatic conditions are so horrible and many other. And this devotee was telling, there is a so this is he's in America. He said, प्रभु in the part of country where I am living, इतना चोरी होता है कि मंदिर में भी चोरी होता है. मतलब कितना कल्चर है कि वो मंदिर में रहते हैं डिवोटी. बोले मंदिर में चोरी होता है. बोले बोला कैसे? तो बोले हम कोई भी बाहर का आदमी आके आश्रम के रूम से चोरी करके चले जाता है. बोले मैं बोला अच्छा. तो ये सेड सिक्योरिटी गार्ड नहीं है. बोले है लेकिन कुछ नहीं, इतना चोरी का उधर प्रभाव है. तो ये सेड द फर्स्ट डे ही वेंट, ही केप्ट हिज वन बुक. And the first day of his stay in America, he said, evening by the time evening I came, the book is lost. And I'm not able to figure out कि book कहाँ चला गया. Book ही गायब हो गया. He said, बोला बाप रे, so dangerous. Yes, bro.
So situations, miseries are same everywhere. There's no difference. Yes, Prabhu. Any other point? Hare Krishna, Right. Prabhuji. Yes, Prabhuji. You said about incarnation, meaning of incarnation. One who got the fleshy body, incarnation. Incarnation means one who has got fleshy body. Flesh means carnation. And Carnation. incarnation means one who has got flesh. That is Flesh. incarnation. And we are reincarnation. We keep on getting flesh again and again. That is reincarnation. Okay, thank you, Yes. Prabhu. And one more point, Prabhuji. You said we judge advanced devotee in material platform or material things. What in what context I said this? Any remember? After we discuss economic development and wealth will not solve the problems. Okay. So our estimation of success, spiritual progress should not be material calculation. Who is a Google devotee, Microsoft devotee, American devotee, Russian devotee? No, he's a devotee. He's Krishna's devotee. Okay. Thank you, Prabhu. Yes, Meghraj Prabhu. Okay. Look, Yes, yeah, Prabhu. Please tell. Yes, Vivek Prabhu. Bewilderment comes when basic philosophy is not Sorry, not clear. able to hear you. You said that bewilderment comes when basic philosophy is not clear. Yeah. Bewilderment comes, the illusion. We are trapped by illusion. So it is said, na, when uh, when the goal becomes hazy, life becomes crazy. So when the goal is not very clear, when the goal becomes hazy, we are not able to see the goal very clearly, then the life becomes crazy. So similarly, when basic philosophy is not very clear, then the bewilderment comes and illusion comes. Thank you, Prabhu, Vivek Prabhu. Any other devotee? So you gave an example of reincarnation, internal reincarnation and external reincarnation. Chaitanya Prabhu mentions like we replace the computer parts individually over the span of computer. So it's like internal reincarnation and after some time when expiry date comes, the all parts are not able to. They are not no longer be able to perform. Then we replace the entire computer. That is external reincarnation. So user of laptop remains the same. User of laptop remains the same. Only the laptop is changing. The bodies are changing. So we are the same only. That Prabhuji gives this example. Okay, last 2 points. Naresh Prabhu. And yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, yesterday you have said that if we want to curb lamentation, so then we have to take shelter of Krishna, and also knowledge means to know about matter, spirit, and control of both. Yes, Prabhu. Thank you. Thank you so much. So okay, Shoka. Shoka can be given by Shloka. So there is one very famous statement. Shloka for a Shoka. Whenever Shoka troubles you, remember Shloka. There are so many examples like that. Shoka for a Shloka for a Shoka. Mayapur voice? Yes, bro. We discussed that Krishna addressed Arjuna as Kaunta and Bharata to realize that he's coming from a very high lineage. So he cannot show this, what to say, Yeah. this type of behavior. Yes, bro. So every word used in Gita has a very specific purpose and meaning. And generally, when we read, we just bypass it. We don't understand ki what is the importance of every word Krishna is using. But every word has a specific meaning which Krishna is using. So yesterday we are discussing about uh, the 2.14, the very famous shloka of Gita, Matra Sparshastu Kaunteya Sitoshna Sukha Dukkhada. So Krishna is telling Arjun, let there be no lamentation caused by sorrow concerning Bhishma's existence in future if he dies. Don't worry, don't be sorrowful. But then Arjuna is telling him, I am not lamenting. I am lamenting because I will get separated from him, and that's why my mind and senses are burning up. So he said, you are telling that he will die, but I will not, I will lose his association. Whenever we lose association of devotee, we naturally feel very painful.
So he said, I'm feeling separation from him. So here, matra. Matra sparshas tu kaunteya. What is meaning of word matra? The matra means senses, the skin in which sense objects are defined. So matra is referring to the senses. And sparsha. Sparsha means that is sensation. That is perceptions. Perceptions of sparsha. So he said, so everything is matra and sparsha. Matra is senses and sparsha is perception. So he said, the perceptions bestow sensations of hot, cold, happiness, and distress. So we find cold water. The cold water in the summer season gives the pleasure, but in the winter, the same water gives lot of pain. So that's why Krishna is telling, tolerate this. Tolerate this anityan. This is temporary. Matra sparshas kontya sitoshna sukha dukkada. This is anityan. Because why they are anitya? Because agama paina. Agama paina means they appear and disappear. They appear and disappear. And that's why they are uncertain. So that's why Prabhupada is writing that somebody takes cold bath in the month of Magha. It is very difficult. So he said, similarly, certain things will be very difficult in the life. But Arjuna is told that you should fight with Bhishma, although it is difficult, because it is according to the rules of scripture. So don't worry too much about discomfort. We should learn to tolerate the discomfort for the execution of dharma. And that's why Krishna is telling it is improper for you to abandon dharma because you are coming from the great families. Now, the 15th shloka. What is the outcome when somebody tolerates? It is said, somebody tolerates, then what will be the effect he will get in his life? So the next shloka, very beautiful shloka. Some of you might have memorized this one. In case you're not memorized, please memorize. This is a very, very beautiful shloka of 2.15. Generally, many people don't know about this shloka. 2.14, many devotees know, but 2.15 is also really very, very beautiful. So 2.15. Prue, somebody can share the screen. In case you can share, Prue, Tejas, Prue, or someone, because I want to read from my personal copy of Gita, so it will become difficult to scroll down and all. You can just share. Yes, Prabhuji, but that will be Veda-based Bhagavad Gita. Veda-based Gita, yeah. Okay, I'll just check. Okay, Veda-based Acharya only? means Acharya's No, commentary enough, and all. Acharya. 1 minute, I'll just see. I can share. That scrolling down takes a lot of time. Okay, So you can give access to it. fine. Let's see. I'll try. Whenever I need, I will. This is 2.15. Yam hina व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम समृद्धत्वाय कल्पते. Yam hina व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समसुखम दुखम धीरम amrutattvaya galpate. So what is the meaning of this? Vethayanti. Yam hi. So he said Vethayanti. Vetha are distressing. Purusham Purusharshabha. So here Arjuna is addressed as best among men. And Sama Sukha Dukha Dhiram. Sama. Sama means do not get disturbed by Sukha and Dukha. Dhiram. Remain patient. And Amrut Tatvaya Kalpate. He becomes eligible for liberation. So this shloka 2.15 is telling about what is the result when somebody learns this art of tolerance. What you will get if you tolerate. So he said, what you will get? You will get liberation. You will become free from the bondage. Yes, Prue, please read the translation. Translation. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Purport. Purport. Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnashram institution, the fourth stage of life, namely the renounced order, sannyas, is painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyas order of life in spite of all difficulties.
The difficulties usually arise from having a severe family relationship to give up the connection of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, in Arjuna's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to pursue even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet, for a higher cause, he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. Yeah. So the shloka, you see, to get anything higher in the life, one has to be ready to give up the lower things. Although it may be very pleasurable. Like in a childhood, a small child gives up his playing propensities to get education. Although education is not very pleasurable. Later, to get a job, one gives up the homely comforts and goes and travels at different location. Then for a married life, he may have to get many more inconveniences. So you see, to advance for advancement in spiritual life or advancement in material life, acceptance of some sort of inconvenience is necessary. It is a necessary thing to get to accept a responsible position. So Prabhupada is beautifully mentioning in his purport here. Prabhupada is mainly talking about the sannyas ashram or the varnashram institution. Like every person may like, okay, I will remain in the family life lifelong. But Prabhupada said, but varnashram institution says no, one has to, after a certain age of life, one has to accept vanaprastha. Although it may be a little painful to get separated from the family, wife, children, because so much amount of energy is spent by a person to accumulate wealth, set up his family, set up his empire, and everything. But as soon as 50 age comes, 50, 60, person is told, now you take vanaprastha, you retire. You see, immediately, even the government of India, as per the laws, by the age of 58, even if a person is capable, but still he is asked, now you retire. Why? Because you have to execute some higher duties now. It is not that you keep on working for the same things. So many people don't like retirement. I remember when my father got retired, then my father got retired, but still he started another business at the age of 60. I said, अरे रिटायरमेंट आ गया क्यों? बोले खाली बैठ नहीं सकते प्रभु, हम कुछ तो करना है हमको. उन्होंने अलग बिजनेस चालू कर दिया. कोचिंग क्लास चला पढ़ा चालू. सीए, my father was CA. Then he started CA coaching class. बोले मैं 10 बच्चों को CA बना के दूंगा. एंड सीए कोचिंग क्लास चालू किया. बोले खाली नहीं बैठ सकता आदमी, कुछ ना कुछ करना होता है उनको. तो देन आई वाज, but why the retirement is given to people? Retirement is given so that now they can focus on some other important aspect of life. So similarly, why tolerance is important? Tolerance is important so that we can focus on some other important purpose of life. Okay, tolerate the inconveniences, focus on the higher goal. That is the importance of tolerance. So Prabhupada is mentioning in the sannyas order of life is very painful. Nobody would like to take sannyas, but it is said, it is advocated as per the Varnashrama system. You see, Prabhupada's example is given. Prabhupada gave up his family for the sake of higher responsibility. Chaitanya Mahaprabhu gave up this responsibility, young wife, mother. Then we know Shankaracharya, Madhvacharya, Ramanujacharya. So many people have done that way. So similarly, Krishna is telling Arjuna, it may be painful for you right now, but you have to accept this pain for a sake of higher responsibility. And anyone who does this will become eligible for liberation. Okay, this is a quiz time for you. Who knows a shloka from Srimad Bhagavatam which says, anybody who learns to tolerate the difficulties and says thank you to the God, thank you God for giving me this suffering, becomes eligible for liberation. Kunti Maharani? Okay, which shloka? Please tell. Prajya, I don't know complete shloka, Oh, but that is not Kunti Maharani. Okay. Who knows the full shloka? Tatyanukampa Then Yeah, recite full shloka then. Yeah. तत्तेनुकम्पाय सुसमीक्षमास भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं ऋत्वा वपुर्भिर्विदधान नमस्ते जीवे स यो मुक्तिपदे स दयाभाग. Now you see what is the
लिबरेशन और भगवान का मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया? इतना ही बताया। क्या करना है? तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। सो वन हु लर्न्स टू टॉलरेट all the sufferings and reactions he's getting in his life, and at the same time he's grateful for that. He's thanking Lord, thank you Lord for giving me this. This is vipakam. Vipakam means ये मैंने ही पकाया हुआ है, जितना भी सफरिंग है मैंने ही पकाया है। जैसे कि अगर कभी कभी डिवोटीज का पेट गड़बड़ कर देता है, पेट गड़बड़ करता है, मॉर्निंग में कुछ गड़बड़ हो रही है पेट के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं? ये मेरी ही करतूत का फल है। रात को मैंने कुछ तो गड़बड़ पकाया, मैंने कुछ गड़बड़ पकाया और उसका सफरिंग आज मुझे आ रहा है। तो सिमिलरली डिवोटी सेस, ओके ये मैंने ही पकाया हुआ कर्म है, ये जो भी सफरिंग आ रही है ये मेरे ही करतूत का परिणाम है। तो ही टॉलरेट्स दोज डिफिकल्टीज एंड एट द सेम टाइम सेज थैंक यू टू द लॉर्ड। तो इसको क्या बोला है? दायो भाग। दायो भाग मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। दायो भाग मतलब हेरिडेटरी में मिलता है उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो उसका पूरा हक है उसके ऊपर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर। तो भगवान कह रहे किसका हक है? जो व्यक्ति लर्न करता है डुअलिटीज को टॉलरेट करना और आगे भक्ति में लगा रहता है, तो उसको कहते हैं कि दाया भाग, उसका हक बन जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दिस इज 2.15. Coming to the 2.16 now. This is also very beautiful shloka. न शतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। सो ब्यूटिफुल श्लोका ना। न शतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। तो ऐसा एकदम फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया है। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। जैसे हम इंग्लिश में भी कभी कभी अलंकार यूज करते हैं ना, मेटाफोर। देन तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलते हैं और उसका अपोजिट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कृष्णा, हम इंग्लिश में भी कभी कभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं ना, दैट ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। देन सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं कि डोंट आस्क व्हाट कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। जो पैलिंड्रोम कहते हैं ना, पैलिंड्रोम या रिवर्स स्टेटमेंट। सो न शतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। सो दिस लाइक उसका उल्टा उल्टा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवद गीता. So they, in scriptures, there are two kinds of shlokas. One is called as prose. Prose means poetry, and another is called as sorry. One is poetry, another is called as prose. So prose is little different way. It is written in a different manner. And poetry means it's a kavita. So Bhagavad Gita is a philosophical kavita that is written by Krishna. And it is said if kavita, somebody recites this kavita, even shloka uchcharan itself will purify a person. Just by recitation of shloka, one will get purified. So na shato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata. Yes, Prabhu, please read. Translation: Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. Yeah. So acharyas have given a huge commentary for this, Prabhu. I don't know whether I should go for it. Very huge commentary into this. But okay, I'll just take Prabhupada. Prabhupada has summarized all the commentaries into his beautiful purports. Yes, Prabhu. So यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है कि ना शतो ना सतः ना अस्तः, he said non-existent, vidyate bhava, and na abhava, changing quality, vidyate sata. So he said those who are very knowledgeable people, they have come to the conclusion that for a material body is a very temporary thing. Material body will not exist tomorrow. And he said for soul will always exist because soul never dies. And this is the conclusion of all the great people, those who have very carefully studied body and soul. That for material body is there, we cannot, material body is impermanent. It is not going to last. And similarly, spirit soul, it is always be permanent. There is no change only in the spirit soul. Yes, bro. Purport? But there is no endurance of the changing body,
that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit. By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Puran 2.12.38, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. Jyotimsi Vishnur Bhuvanani Vishnu. The words existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all seers of truth. This is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the Supreme Personality of Godhead. One can understand the nature of the Supreme Personality nature of Supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the Supreme Being understood as the relationship between the part and the whole. In the Vedanta Sutras as well as in the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature as it will be revealed in the seventh chapter. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme, and the energy or nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. So Prabhupada is writing, such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. So sometimes while reading Srimad Bhagavad Gita, devotees feel, Prabhupada इतना क्यों बार बार बोलते हैं भाई, बॉडी सोल बॉडी मैटर, इतना समझ गया ना, एक बार की बात है समझ गया अभी। तो ये डिवोटी का भाग्य है कि उसको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। ये प्रभुपाद की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। अगर आप ट्रैवल करोगे, प्रचार करोगे ना, थोड़ा इधर उधर जाओ, 99% रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके फिलोसफी में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा। मैं रिसेंटली कर्नाटका में गया था, पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इधर उधर बहुत सारे तालुकाज में गए हम, इधर उधर 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 बहुत सारे फिलोसफीज देखने को मिले, लोगों से एनकाउंटर करने मिला। सब बाहर से सब सेम दिखते हैं, थोड़ा वर्शिप करना, घंटी बजाना, प्रणाम करना, रिस्पेक्ट करना, लेकिन उनका फिलोसफी जानने का ट्राई करो प्रभु, बहुत गड़बड़ है, सब फिलोसफीज में गड़बड़ है। और लोग समझ नहीं पाते अभी भी कि क्या मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव दिस मायावाद फिलोसफी ओनली। सो प्रभु, ये हमारी चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हमको समझ पा रहा है कि बॉडी सोल का जो डिफरेंस क्या है वगैरह। अदरवाइज प्रभुपाद जैसे बोल रहे हैं, स्पेल ऑफ इग्नोरेंस में इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। सम पीपल से ब्रह्म ही शिव है, शिव ही ब्रह्म है, भगवान ही सब शिव है और हम भी सब शिव बनने वाले हैं, ऐसा ही फिलोसफी है। नो मैटर हुम यू वर्शिप, एवरीवन इज गॉड। सो यहाँ पे प्रभुपाद ने कितना अच्छे से हमें बताया है कि एनर्जी क्या है, एनर्जेटिक क्या है। तो बिकॉज हमने डिवाइस कोर्स अटेंड कर लिया है ना, तो काफ़ी इजीली हमें समझ में आता है। यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, हाउ टू रिमूव इग्नोरेंस। सो ही सेड रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस मीन्स establishment of our relationship between worshipper and worshipable, sambandha gnan. When the sambandha gnan becomes very clear, then abhideha becomes very clear, and when abhideha becomes very clear, prayojan becomes very clear. तो कई बार डिवोटीज कहते हैं ना, प्रभु मेरा साधना अच्छे से नहीं हो रहा है। साधना क्यों नहीं होता मेरा, जब भी अच्छे से नहीं होता, बुक रीडिंग भी नहीं अच्छे से होता है, कुछ भी नहीं अच्छे से होता है। तो अभिधेय अगर आपको हमें इम्प्रूव करना है, तो हमें सबसे पहले संबंध क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने संबंध किसी अलग चीज से बना दिया है आज। जैसे कि किसी ने कंपनी से संबंध बना दिया है, तो 10-12 घंटा उस कंपनी का ही विचार करता है, कंपनी को कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिट कैसे लाना है। किसी ने हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना दिया है, तो दिन भर उसके साथ ही वो कनेक्शन विचार करते रहते हैं।
तो जिसके साथ संबंध गाढ़ा बन गया है वहां पे अभिदेह जाएगा। तो सिमिलरली हमें संबंध जो है, भगवान से संबंध ज्ञान अगर क्लियर होता है तो देन अभिदेह हमारा अच्छा बन जाता है। सो यहाँ पे इसलिए इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि सारे ग्रेट पर्सनालिटीज, जितने भी ग्रेट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने यही बताया है कि जो बॉडी है वो बहुत टेम्पररी है और उसका कोई रियलिटी नहीं है इन वन सेंस। सोल जो है दैट इज परमानेंट रियलिटी। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। Some of you might have heard this statement that this material world is like a dream and this material body is like a dream. How many of you heard this statement before? You can chat, raise your hands, or कि material world जो है ड्रीम है। ओके, कुछ लोगों ने सुना है आप में से, राइट ना? क्या वो कोई मुझे बता सकता है कि मटेरियल वर्ल्ड ड्रीम कैसे है? इसका मतलब हम जो अभी क्लास दे रहे हैं वो भी ड्रीम है, आप जो नोट्स बना रहे हो हाथ ऊपर कर रहे हो वो भी ड्रीम है, या क्या है ये ड्रीम? कैसे है ये मटेरियल वर्ल्ड या मटेरियल बॉडी ड्रीम कैसे बताया गया है? Just like in a dream, the objects are there, but as soon as we come out of the dream, there is no more existence of this object. Similarly, if material world is a dream, means all the things here are temporary, and as soon as we will go to another body, this body is just like non-existent, and things related to it, so it is like a dream. Yeah, very good, thank you, very perfect point. Any other point? मटर वर्ल्ड को, मटर बॉडी को ड्रीम क्यों बोला गया है? So it's just like Roji, when we are in a dream, we feel all the things like happiness or pain. The same is here also, but it is for a short period of time or it is temporary. Very good. Yes, bro. Yes, Vivek, bro. so it's just like in a dream, we identify ourselves with that some situation which is in dream, so much so that we feel everything to be reality. In the same way, in this current material world, we identify ourselves with body and mind, so much so that we feel that everything what is happening is with me, the soul. Yeah, very good. Almost all of you are very perfectly correct. No problem. So once Srila Prabhupada told this point, everything is illusion in this material world. Then you know what happened? One devotee started thinking, okay, everything is illusion. So he started telling, everything is illusion, everything. He started chanting this mantra, everything is illusion, everything is illusion, everything is illusion. He started chanting this mantra. And he said, this wall is also illusion, this home is also illusion, everything is illusion. And he started walking, walking, walking. He came across one wall and he said, everything is illusion. And dhar, he got smashed against that wall. And then he said, Arey Prabhupada, I got a bump on my head. Then he said, Prabhupada, you said everything is illusion. I'm chanting this mantra also, but I got bump on my head. It appears so real. You say it's illusion. Prabhupada said that same point, what Kaushik Prabhu and all of you said, that everything is illusion means what? This currently in a dream situation also you get pain and suffering. In dream also you suffer and pain. So it is said only thing is the effect is real only. The effect even in the dream, the person suffers and all, that is real only in one way. But it is temporary. That's why it is called as illusion. It is not going to last it is not a permanent situation. Something is not permanent situation, then we call it's okay, it's a temporary situation only. That's why it is called as dream. That's why material world is called as dream. Like in dream, we watch that we became millionaire, but as soon as morning we come to know that I don't have job only. I'm thinking about I'm millionaire. So it's a dream only. Similarly, in this material world, we imagine many, many dreams, but they're not the realities. That's why material world is called as illusion and dream. So here, that is the conclusion of all the great scholars. Now, the next shloka, 2.17. So why this is being told to Arjuna? One is, what is the result of tolerance? The result of tolerance is liberation. And to get liberation, Krishna is now telling little more things about the soul. Because identity, what exactly the soul is. 17 shloka, very famous shloka also again. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अविनाशी. So one of the qualities of soul is अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता. तू तद्विद्धि, जान लो बेटा अर्जुन, जान लो. विद्धि मतलब जान लो. अविनाशी है ये सोल. तो तुम सोच रहे हो कि तुम किसी को मारोगे तो मर जाएगा? सोल तो कभी नहीं मरने वाला है. ये न सर्वम इदम तत. सोल जो है क्यों नहीं मर सकता है पता है आपको? क्योंकि ये न सर्वम इदम तत, मतलब ये तो ऑल परवेडिंग है. तो इस साइड की कभी नहीं मर सकता.
विनाशम अव्ययासस्य। he said बॉडी जो पेरिश भी हो गई लेकिन सोल पेरिश नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है कोई चीज अगर किसी में घुस जाती है तो वो क्या होता है पता है, वो उसको नाश कर देती है लेकिन उसका नाश नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुलेट, अगर किसी ने बुलेट आपको मारी, बुलेट अगर आपकी बॉडी में परवेड हो गई तो क्या हो जाएगा, बॉडी मर जाएगी, बुलेट रह जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल जो आता है, कोई किसी चीज में घुस जाती है, पानी, किसी के बॉडी के अंदर पानी घुस गया, डूब गया वो व्यक्ति, तो पानी अंदर परवेड हो गया, ऑल परवेड हो गया, पानी उसके बॉडी में ऑल परवेडिंग हो गया, तो जो बाहर का बॉडी था वो मर गया। तो जो चीज अंदर घुसती है वो जो बाहर है उसको मार देती है। मीन्स लाइक दैट, जैसे कोई वायरस भी अंदर घुसता है कभी कभी, इतना प्रोमिनेंट बन जाता है कि बाहर के बॉडी को मार देता है। तो यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं जो सोल है उसको कोई मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोल ऐसी चीज है जो दूसरों में घुसता है, किसी में चीज में भी घुस सकता है, सोल के अंदर कोई घुस नहीं सकता। ये सोल जो है किसी के अंदर भी घुस सकता है, हर चीज में सोल घुसता है। तो इसे सोल को तो कोई मार ही नहीं सकता क्योंकि सोल घुसने वाली चीज है, उसके अंदर कोई घुसता नहीं है। तो अविनाशी, सोल इज अविनाशी। यस ब्रो, ट्रांसलेशन। The which pervaded the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. या सो वही बोल रहे हैं, सोल जो है वो परवेडिंग है, ऑल परवेडिंग है, पूरे बॉडी में परवेडिंग है। तो उसको कैसे मार सकते हो, वो तो मर ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑल परवेडिंग है। जो चीज़ ऑल परवेडिंग है उसको कैसे मारोगे आप? तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय द इम्पेरिशेबल सोल। यस ब्रो। But this verse more clearly explains the real nature of the soul spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is everyone is conscious pleasure of the body is part of this spreading of म्यूट, कोई तो अनम्यूट है, उनको म्यूट कीजिए। या this spreading of consciousness is limited within one's own body. The pain and pleasure of one body are unknown to another. Therefore, each and every body is embodiment of individual soul, and the symptoms of the soul presence is perceived as individual consciousness. This soul is described as 1/10 thousand part of upper portion of hair point in size. सो ओके, तो श्वेतश्वात्रोपनिषद confirms बालग्रह शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञेय स चान्यत्यया कल्पते। When upper point of hair is divided into 100 parts and again each of such part is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of spirit soul. Similarly, the same version is stated. Yeah, so similar shloka comes in Chaitanya Charitamrita only, that there are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000 of the upper portion of the hair. Therefore, the individual particle of spirit soul is spiritual atom smaller than the material atoms, and such atoms are innumerable. This very small spiritual spark is the basic principle of material body, and the influence of such spiritual spark is spread uh, all over the body as the influence of active principle of some medicine spread throughout the body. This current of spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of the presence of the soul. Any layman can understand that the material body minus consciousness is dead body, and this consciousness cannot be revived in the body by any mean of material administration. Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination, but this but to the spirit soul. Yeah. So it is said there are two kinds of science. In material science, they say that from heart, because of blood, the life is floating, the life is happening. And in Ayurveda also, they say that there are five kinds of air: prana, apana, vyana, samana and udana. तो प्राण वायु मतलब जहाँ जिससे पूरा कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में कहीं पेन पेन भी होता है
तो इमीजिएटली हमें समझ में आता है। अगर नाखून भी कट गया तो कैसे समझ में आता है कि नाखून कट गया करके? दैट इज द वायु, जो कॉन्शियसनेस है वो प्राण वायु है, प्राण वायु, जिससे कॉन्शियसनेस कहते हैं। अपान वायु, अपान वायु मतलब क्या? जो डाइजेशन करवाता है पूरा। जैसे मॉर्निंग में हम नेचर कॉल जाते हैं तो जो पूरा एयर निकलता है, अपान वायु, अपान वायु अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो किसी का डाइजेशन खराब हो जाता है पूरा, उसको इंडाइजेशन हो जाता है पूरा। अपान वायु। तो इसे ये 5 एयर जो है, सोल जो है वो 5 काइंड ऑफ एयर में फ्लोट कर रहा है, और दैट इज द बॉडी पूरा उसमें। सो ये बताया गया है। तो हठ योगा में जो हम योगा करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, पूरा योगा आसना, इसका पर्पज ये होता है कि पांचों एयर को बैलेंस किया जाए। जब प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, तो जनरली ऐसा करने पर व्यक्ति हेल्दी रहता है, एंड देन ही कैन फोकस ऑन स्पिरिचुअल लाइफ। दैट इज द पर्पज ऑफ हठ योगा। सो ओके, यस प्रू, प्लीज रीड। The influence of atomic soul can be spread all over a particular body, according to Mukunda Upanishad. मुंडक, मुंडक, मुंडक नाम के मुनि थे, उनके नाम पे है मुंडक उपनिषद। This atomic soul is situated in the heart of every living entity, and because the measurement of atomic soul is beyond the power of appreciation of material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. The individual atomic soul is definitely there in a heart, uh, belong with the super soul, and thus all energies of bodily measurement are emanating from this part of body. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs gather energy from the soul. When the soul passes away from this portion, the activity of blood generating fusion ceases. Medical science accepts the importance of red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of the uh, Source of the energy is the soul. medical science, however, does admit that the heart is the seat of the all energies of the body. Such atomic particles of the spirit's whole are compared to the sunshine molecules. In the sunshine, there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragment part of the Supreme Lord are atomic speed, a spark of the rays of the Supreme Lord, called the name as Prabha or superior energy. So, whether one follows Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of spirit soul in the body. And the science of the soul is explicitly described in the Bhagavad Gita by Supreme Personality of Godhead Himself. So, see, this is the power of soul. So, what is the difference between soul and super soul? So, it is said our soul. Soul has one of the symptom of soul is consciousness. Now, I can understand what is happening in my body. I know there is, suppose this, my headache is happening, or finger ache is happening, or something is happening. But many of you may have some certain difficulties related to your body right now also. But I cannot experience what is happening in others' body. So this is a limitation of a soul. So, but any part of my body, something happens, immediately brain comes to know. That is our individual consciousness. But cumulative of all this consciousness, that is Krishna, that is God's consciousness. So God knows everything about what is happening with everyone in this world. That is that is a super soul. He knows about everyone. Here, Prabhupada is mentioning about the power of soul. Medical science is telling that because of red blood corp, RBC, WBC, the things are happening, energies are floating, and all these things are there telling like that. But people are not able to see the soul, and the dimension of soul is being mentioned. The dimension of the soul is 1/10,000 the tip of the hair. Now, somebody may question, Prabhu, tip of the hair क्या होगा exactly? 10,000, 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर। अभी सबका टिप ऑफ द हेयर अलग अलग भी हो सकता है। किसी के बहुत पतले बाल है, किसी का बहुत ज़्यादा बाल है, तो उसके कंपैरिजन में 1/10,000 तो बदल जाएगा। भाई इतना छोटा 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो के बॉडी को चला रहा है। ये थोड़ा सा बिलीव करना डिफिकल्ट है। और उसका फॉर्म क्या होता है? क्या सोल को कोई फॉर्म होता है? नहीं होता है। व्हाट डू यू से? इस डज सोल हैव एनी फॉर्म और नो फॉर्म? कौन सा फॉर्म होता है सोल को प्रभु? Yes, Prabhuji, it has a form.
कौन सा फॉर्म है प्रभु? वन टेन सचेतन थाउजेंड द टिप ऑफ द हेयर। डिपेंड करता है यस प्रभु। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में which position constitutional position it is in spiritual world that form the soul has. ओके, तो अभी वो हाथी के बॉडी में पड़ा है, लेकिन अंदर गोपी बैठा है, ऐसा? ओके, व्हाट डू यू थिंक? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद फॉर्म होता है प्रभु। हाँ हाँ, सचिन तो बेसिकली वो इमेजिन करना डिफिकल्ट जा रहा है ना। सच्चिदानंद स्वरूप क्या होता है? वो कोई इम्पर्सनल है, पर्सनल है, क्या है अभी वो? मतलब इलेक्ट्रिक करंट का स्पार्क है, क्या है एग्जैक्टली? मेल है, फीमेल है सोल? फीमेल, कुछ भी नहीं है प्रभु, मेल और फीमेल कुछ नहीं है। See, this is the difficulty which very difficult to understand ना, क्योंकि 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर जो बॉडी को चला रहा है, उसका रूप कैसे डिसाइड करे समझ में नहीं आ रहा है। मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द पावर ऑफ सोल लाइक दिस। बट इफ यू सी, देर आर मेनी थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विच आर रियली बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, विच डजेंट वर्क। जस्ट थिंक लिटिल सिम कार्ड, नैनो सिम आता है, नैनो सिम, माइक्रो सिम, माइक्रो एचडी, इतना छोटा सा, इतना छोटा छोटा सिम कार्ड है, लेकिन क्या क्या चल रहा है, पूरे दुनिया को चला रहा है वो। कर लो, दुनिया मुट्ठी में हो रहा है उसके हाथ से, पूरे छोटे से मोबाइल, छोटे के मोबाइल के सिम कार्ड से, है ना। नैनो सिम मोबाइल होता है, वीडियो होता है, बात होती है, अमेरिका में बात होती है, क्या क्या नहीं होता है उससे। जोमेटो चलता है, ब्लिंकिट चलता है, सब चलता है एक छोटे से सिम कार्ड से। क्या पावर है एक छोटे से वो सिम कार्ड बना किसका है? मिट्टी का, सिलिका ना, मिट्टी का ही बना है, मिट्टी का कॉम्बिनेशन है वो पूरा। इधर उधर प्लास्टिक, मतलब मिट्टी का कॉम्बिनेशन इधर उधर मार दिया है, और पूरी दुनिया चल रही है उस पर। तो मटेरियल एनर्जी इतनी इनकंसीवेबल है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी इनकंसीवेबल होगी, मीन से सोल। चलो अभी 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, क्या ये एग्जैक्ट डायमेंशन है, या जस्ट एज अ मैटर ऑफ फिगरेटिव है? मतलब बताने के लिए क्या लगता है आपको, ये एग्जैक्ट डायमेंशन होगा या फिगरेटिव होगा, जस्ट बताने के लिए? फिगरेटिव होगा प्रभु। हम्म, तो यहाँ पे कहते हैं कि वो एग्जैक्ट भी है और फिगरेटिव भी है, दोनों है। आपको जो बता समझना है समझो। एग्जैक्ट भी है क्योंकि बेसिकली आप सोल को गिन नहीं सकते, मतलब ये उस सोल तो यहाँ पे फिगरेटिव भी बोलो, एग्जैक्ट भी बोलो, कोई बात नहीं, क्योंकि इट्स 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर। और दूसरी बात, चलो अगर मैंने फ्यूचर में कोई माइक्रोस्कोप बना दिया जो 1/10,000 का एम्पलीफाई मैग्नीफाइंग करे, तो क्या मैं सोल को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा? अगर मैंने सचमुच नहीं एक देखते, क्यों नहीं देख पाएंगे? वो स्पिरिचुअल है। हाँ, क्योंकि वो मटेरियल है ही नहीं। मटेरियल मतलब इट इज एंटी मैटर, इट इज नॉट मैटर ओनली, इट इज एंटी मैटर। यू विल नॉट बी एबल टू सी द सोल लाइक दैट, बट वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ सोल। बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर चला गया रिसेंटली, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इटली ये जाते हैं, क्या चला गया? इतना बड़ा बॉडी था, एक छोटा सा स्पार्क चला गया है अंदर से, जो। सो वी फाइंड दैट दिस इज द नेचर ऑफ सोल हियर, नाशतो विद्यते भाव एंड विनाशी, दैट सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। प्रभु जी वो फॉर्म का क्लियर नहीं हुआ, सोल के फॉर्म। फॉर्म, सोल का फॉर्म क्या है? तो व्हाट अवर कौशिक प्रभु सेड, दैट इज ओनली अंडर, दैट इज ओनली गिवन हियर, दैट सोल इज सच्चिदानंद and it has a form in the spiritual world, but currently that form is in the संकुचित state ना। संकुचित, संकुचित मतलब जैसे कि like there are different stage of blossoming of consciousness, sankuchit, mukulit, and prafullit, purna prafullit. Like there are different states of blossoming of the consciousness. So what happens is, like a small child is there, when a small child takes birth in the womb, so currently the consciousness is very संकुचित, it is very almost not there. उसको आप गाली दो, छोटे बच्चे को गाली दो, कुछ समझ में नहीं आता। आप उसको अप्रिसिएशन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस जो है अभी, उसको इवन पेट में क्या हो रहा है उसको समझ में नहीं आता ज़्यादा, वो तो रोते रहता है बस, उसको कुछ समझता नहीं क्या दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कुछ भी नहीं समझता। हमको एग्जैक्टली समझता है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा हेड दुख रहा है। बच्चे को कुछ नहीं समझता, वो समझा तो बता भी नहीं पाता है वो, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस बहुत अभी श्रिंकन है, श्रिंक्ड है, कॉन्शियसनेस श्रिंक हो गई है। सिमिलरली प्लांट्स में एनिमल्स में, सोचो गोट जो है मारी जा रही है, गोट का इतना स्लॉटर हो रहा है, लेकिन उसको कुछ भी बुद्धि नहीं चलती कि मेरा भी नंबर आने वाला है, कुछ समझता नहीं। कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा उसकी श्रिंक हो गई है। तो सिमिलरली जो सोल है, अब आप बोलोगे 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, इतना ही साइज है उसका, करेंटली वो श्रिंकन स्टेट में है, श्रिंक है, श्रिंक का इतना पावर है।
जैसे लेकिन वो स्पिरिचुअल लाइफ में आता है, जब वो लिबरेशन प्राप्त करता है इस बॉडी मटेरियल बॉन्डेज से, तो पूरा प्रफुल्लित हो जाता है फिर से वो। इट कम्स इन द ओरिजिनल स्टेट, दैट इज सो प्रफुल्लित। सो ये 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर फॉर्म सोल का फॉर्म है। अभी एग्जैक्टली इसके बारे में कहीं सुनने में नहीं आया कि वो मे बी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के स्वरूप में ही है, गोपी गोपा के फॉर्म में है, दैट इज अ फॉर्म। बट अभी मटर वर्ल्ड में आने के बाद वही फॉर्म लेके आता है नहीं आता है, इसका ज़्यादा कहीं पढ़ने में तो नहीं आया है एटलीस्ट मुझे कि। यस मायपुर वॉइस प्रो। Prabhuji, some boys sometimes answer this, ask this question that you say just like the T-shirt have two hands because you have two hands. So soul has a form, that's why you have a form. Then they say that एनिमल की बॉडी के अंदर जो फॉर्म है वो अलग है क्योंकि उसको चार आते हैं ना, तो उधर के सोल को चार आते हैं और तुम्हारे दो आते हैं तो तुम्हारे सोल को दो आते हैं। तो इसको आंसर कैसे कर रहा है इस क्वेश्चन? That's why first that's why this all the knowledge of soul is given. What is the soul? Soul is not a material thing at all, first of all. So all the material calculations and logic fails. That because if you apply material logic and material calculation to the soul, then everything. So this is the that's why the knowledge of soul is given here. That first of all understand the soul is not the matter. एंड जैसे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज सोल है। तो ये बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन गुलाब जामुन भी सोल है। यार गुलाब जामुन पेट में जाने के बाद सोल पेट के अंदर जाएगा कैसे? वो भी बातचीत करता है, गुलाब जामुन भी बातचीत करता है। बाद में हर चीज सोल है। तो ये बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो आचार्य और ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर्स ये बता रहे हैं कि पहले इतना समझ जाओ ये अचिंत्य है। ये कैसे काम करता है, काम नहीं करता, मतलब ये फाइनल। इसलिए भगवगीता में कृष्ण ने नहीं बता दिया है कि तुम नहीं समझ पाओगे। सोल को कट नहीं कर सकते, सोल को मेजर नहीं कर सकते, सोल को अगर हम ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं कि एनिमल की बॉडी में चार हाथ है, ये अगेन मटर लॉजिक हो गया है। मटर लॉजिक हो गया है कि इसके चार फॉर्म होने चाहिए। सबसे पहले यही डेफिनेशन हमें अंडरस्टैंड करना है कि सोल पे मटर लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। और इसीलिए ये सारे वर्सेस अर्जुन अर्जुन को भी यही क्लैरिटी दिया जा रहा है इन श्लोकों के द्वारा कि डोंट अप्लाई मटर लॉजिक टू द सोल। क्या होगा सोल के साथ? तो इसलिए सारे श्लोकास इसलिए ही है। तो कहीं ना कहीं लॉजिक रुकता है। मतलब हम कितना भी बुद्धि लगाए, कहीं ना कहीं लॉजिक को रुकाना पड़ता है क्योंकि वो सोल है। मटेरियल लॉजिक उस पर काम नहीं करता। तो कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो नहीं समझ पाएंगे हम लास्ट तक। वो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाके। जब सोल बाहर निकलेगा, कौन सा गोपा निकलता है, गोपी निकलता है, एनिमल निकलता है, क्या निकलता है वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यस रोहित प्रूव। Prabhuji, just Prabhuji, also we यस गो ऑन। just sorry, Rohit bro. no, Prabhuji, just one thing, we can answer boys like this, right? Means we cannot apply material logic to. या वी कैन नॉट अप्लाई द मटेरियल लॉजिक बट बिकॉज फिर भी वो दूसरे लॉजिक के लिए भी वो लोग अपोज करेंगे, लाइक समटाइम्स वो बोलेंगे आप ही पहले लॉजिक देते हो, देन यू आर आल्सो सेइंग नॉट, डू नॉट गिव। नहीं, एक है कि हम जो रिपीट कर रहे हैं, जो लॉजिक भगवान ने खुद ने दिया है वो हम दे रहे हैं। ये हमारा क्रेडिट लॉजिक नहीं है। तो अनुमान प्रमाण जो है ना, ये भी एक प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो भी एक प्रमाण है। और शब्द प्रमाण भी एक प्रमाण है। प्रमाण मतलब इट्स अ वैलिड प्रूफ। इट्स अ वैलिड प्रूफ। जैसे लॉजिक का कुछ ना कुछ यूज होता है, ऐसा नहीं जीवन में। जैसे 10 लोग रूम में गए और पिट के आए, तो 11वें व्यक्ति को समझना चाहिए कुछ तो लॉजिक है यहाँ पे, तो लॉजिक का कुछ ना कुछ मतलब है। ऐसा नहीं कि पूरे लॉजिक को आप उड़ा सकते हो करके। तो जो लॉजिक शास्त्र हमें देता है समझने के लिए, या जो आचार्य देते हैं, उस लॉजिक को हम स्वीकार करते हैं। खुद का लॉजिक नया क्रिएट ज़्यादा करना रिस्की रहता है। इसलिए बहुत बार खुद के एनालॉजीज जो हम बनाते हैं ना, बहुत रिस्की रहती है। वो एक्चुअल में आचार्य बहुत ग्रेट ड्यूटीज कर पाते हैं। और एनालॉजी को एक्सटेंड भी नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। ज़्यादा एनालॉजी को एक्सटेंड किया तो अटक जाता है वो। आप देखो प्रभुपाद ने कितना एनालॉजी यूज़ किया है, बाद में आचार्य ने कितना, क्योंकि किसी स्पिरिचुअल फेनोमेना को समझाने के लिए आपको थोड़ा बहुत मटेरियल, क्योंकि मटेरियल फेनोमेना देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने स्पिरिचुअल फेनोमेना देखा ही नहीं है। तो समझाने के लिए कुछ तो ऐसी चीज बतानी पड़ेगी जो आपने देखी है, मटेरियल फेनोमेना। जैसे कि हम बोलते हैं कि कृष्ण का जो लोटस फीट ऑफ कृष्णा। अभी लोटस देखो, लोटस इतना भी कुछ अच्छा नहीं है कृष्णा के फीट के सामने। लेकिन द क्लोजेस्ट थिंग टू लोटस कृष्णा लोटस फीट इज लोटस फीट। हम लोटस बताते हैं क्योंकि हमने लोटस देखा है, लेकिन सॉफ्टनेस नहीं देखा। लाइक कृष्णा इज सॉफ्ट लाइक बटर। हमने बटर टेस्ट किया है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान पे मटर लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। ये तो थोड़ा सा रिसेम्बलेंस है, थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ तो उसका यूज किया गया है। बाकी देर इज नो परफेक्ट थिंग विच मैचेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड लाइक दैट।
Okay, this is a very sensitive topic to enter about soul. Some questions will remain unanswered, but you can write to Chaitanya Charan Prabhu. If you have a little more intellectual queries for this, write to Chaitanya Charan Prabhu or go to the website spiritualscientist.com. Many queries are answered there. So yeah, you can take that discussion there. Okay, bro. 18th verse. We'll just take one more verse today and then we'll pause for some questions again. अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिना अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत अंतवंत इमे देहा. Yes, bro, please read. The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. Purport. The material body is perishable by nature. It may perish immediately, or it may do so after 100 years. It is a question of time only. There is no chance of maintaining it indefinitely. But the spirit soul is so minute that it cannot even be seen by an enemy. To say nothing of being killed. As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. So, from both viewpoints, there is no cause of lamentation, because the living entity, as he is, cannot be killed, or nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. The minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized. In the Vedanta Sutras, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains this material body. As soon as the spirit soul is out of this material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. The body itself is unimportant. Arjuna was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material bodily considerations. Yeah, so in all the shlokas, the knowledge of soul is given to give up the bodily conception of Arjuna. He's telling, do not give up the duty of fighting just based on this material considerations of body and relationships with this body. So, yeah, I think I had planned to complete till 20th shloka because 5 shlokas at least we have to complete every session. So, we'll quickly read some translation. Maybe more discussion we'll take tomorrow. यैनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न मन्यते. Yes, Provost, please read. Neither he who thinks the living entity is a slayer, nor he who thinks it's slain is in knowledge. For the self-slays nor is slain. So he said, don't ever think that you can kill the soul, or don't think that soul can ever be killed or it can kill anyone. Yeah, bro. Purport. When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from subsequent verses. Nor is the living entity killable because of his spiritual constitution. What is killed or is supposed to be killed is the body only. This, however, does not at all encourage killing of the body. The Vedic injunction is Ma Himsat Sarva Bhutani. Never commit violence to anyone. Nor does understand that the living entity is not killed encourage animal slaughter. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by law of the state as well as by law of Lord. Arjuna, however, is being encouraged in killing for the principle of religion and not whimsically. Yeah. So basically, this is not to encourage animal slaughter. The Vedic injunction is saying never commit violence to anyone.
So that is being mentioned here because it is punishable. So don't think that living entity will ever get killed. Yeah. 20th verse. Very famous shloka. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the soul there is neither birth nor death at any time. He had not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Yeah. So again, that same knowledge is being emphasized again and again. Now somebody may say कि प्रभु ये सारे 4-5 श्लोकों में क्या फर्क है? मतलब मे बी कल आपको जब मैं अगले सेशन में हम जाएंगे हर वर्ष में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि बार बार वही चीज बताई जा रही है 10 श्लोकों में कि सोल क्या है, डेथ नहीं होता, मरता नहीं, नहीं, हर चीज में ना नया नया कंसेप्ट बताया जा रहा है सोल के बारे में हर श्लोकों में. 2.11 से लेके 12 से लेके 2.20 तक हर इसमें एक नया कंसेप्ट ऐड हो रहा है सोल के बारे में. तो मैं अगली बार जब बताऊंगा आपको पीपीटी या उसमें बताऊंगा कि क्या नया चीज बताया जा रहा है इसमें. Yes, bro. Purport. Qualitatively, the smaller atomic fragment part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. He undergoes no change like the body. Sometimes the soul is called the steady or kutastha. The body is subject to six kinds of transformation. It takes its birth from the womb of mother's body, remain for some time, and grow, produces some effect, gradually dwindles, and at last vanish into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because he take on the material body, the body take its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death, and because the soul has no death, no birth, he therefore has no past, present, or future. He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace in history of his coming into being. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc., of the soul. The soul does not at any time become old as the body does. The so-called old man therefore feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. The change of the body do not affect the soul. The soul does not uh, deteriorate like a tree nor anything material. The soul has no byproduct either. The byproduct of the body, namely children, are also different individual souls, and owing to the body, they appear as children of the particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither uh, offshoots nor changes. Therefore, the soul is free from all six changes of the body. Yeah, so more things are mentioned about soul here. Maybe we'll take next time more detailed way. The dimension of the soul and what are the what consciousness of the soul, and the individual soul is forgetful soul. So when the forgetful soul has to remember he has to give up his forgetfulness and has to remember the supreme soul. So little more details are given here. So I think maybe next time when we start, we can begin with this verse again and let it go in more detail for this verse. So basically, here the one point which is mentioned is the soul is free from six changes of the body. Soul is not affected by birth, old age, dwindling, death. That birth, old age, disease, dwindling, and death. Soul has no effects like this. So this is being here mentioned. Okay, so we pause here. Any one discussion or question, and we can take. Otherwise, we'll continue next time. Prabhuji, we were discussing about analogy part, that we should repeat the analogy which are given by the acharyas and by the scriptures.
Guruji, but I have heard once somewhere that in Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur says that analogy is perfect analogy when most of the things are matching. Just like we compared Krishna to sun. So sun is at one place, but through his energies it is at multiple places. And sun absorbs urine but never gets contaminated. And all these things applies to Krishna also. So because of maximum things matching, we can give this analogy. Sometimes Guruji, we see that devotees also in some lectures says that I was contemplating on this point and और फिर वो एक एनालॉजी देते हैं which may not be given by the acharya but that analogy is perfect. So what is wrong in giving analogy, because Bhaktivinoda Thakur also told how to select analogies by matching the maximum points. So if you see His Grace Radhesham Prabhu, Chaitanya Charan Prabhu using huge analogies, because analogy is a way of explaining the things very properly, but generally it's very risky. Best is to repeat the whatever acharyas or great devotees have given. So whatever analogies we are also giving, we are trying to repeat what they have spoken because they are little more into depth. So best is to repeat. Like in device also we repeat Radhesham Prabhu's analogies or Chaitanya Charan Prabhu or any other devotees. Best is to repeat. But when we try to create our own new analogies prematurely, देन फंस जाता है आदमी, कई बार फंस जाते हैं हम। आगे जाके थोड़ा भी एनालॉजी में गड़बड़ आता है तो लोग उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो एनालॉजी का इफेक्ट दिया है प्रभु, जैसे प्रभुपद ने भी टाइम टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से चेंज किया। महाशास्त्रों में चैरियट की एनालॉजी दी है, प्रभुपद ने कार की एनालॉजी दी है, बाद में उधर अलग अलग ऐसे बहुत सारे एनालॉजीज दिए। बर्ड केज के जगह पे कार, काफ़ी कुछ एनालॉजीज प्रभुपद ने चेंज किए है बेस्ड ऑन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। So this is allowed. What you said, this is allowed, but safe is repeat. Safe is to repeat. Then किसी ने अगर आपको आगे पकड़ा तो आप कोट कर सकते हो, प्रभु इन्होंने बोला था, मेरा नहीं था एनोलॉजी। नहीं तो फंस गए तो सेफ साइड पे रहोगे आप। नहीं तो बहुत सारे लोग फंसे भी हैं एनोलॉजी बताने में। इसलिए बाकी अलाउड है, क्योंकि अगर एक डिवोटी है हमारे, वो पूरा रिसर्च कर रहा है, पता है किस पे? रुक्मिणी वल्लभ प्रभु करके डिवोटी है हमारे मंदिर में। इज डूइंग हिज पीएचडी नाउ because he's like a scholar. He's doing his PhD as a brahmachari, and he's doing a PhD on the topic of the use of Anuman Praman even in Bhakti literatures. अनुमान प्रमाण, अल्दो अनुमान प्रमाण बोलते हैं ना, अनुमान प्रमाण जो है अरे इतना अच्छा प्रमाण नहीं है, लेकिन हम देखो हमारे आचार्यों ने भी अच्छा खासा यूज़ किया है उसको कुछ समझाने के लिए, जीव गोस्वामी सब ने यूज़ किया है। तो बहुत सारी चीज़ें जब लॉजिक से कन्विंस होती है तो व्यक्ति ले लेता है लॉजिक को। और आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आप देखो लॉजिक ही देते हैं, बाकी कोई शास्त्रिक बेसिस देते ही नहीं हो। मतलब कुछ तो क्यों दिया मंदिर जाना चाहिए ये एनालॉजी, कुछ क्यों दिया 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 टच करना चाहिए ये एनालॉजी, कुछ तो दे देते हैं, आदमी को लॉजिकल लगता है वो ले लेता है। लेकिन हमारा जो लॉजिक है वो केवल ऐसा लॉजिक नहीं है, शास्त्र का बेसिस चाहिए उस लॉजिक को। सो थोड़ा सा हमारा एनालॉजी बना सकते हैं, केयरफुली बनाना है सिर्फ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट। लगे तो वेरीफाई भी करवा सकते हैं, प्रभु ये चलेगा ना? नहीं तो कई बार, एक बार मैंने भी एक एनालॉजी बनाया था, मोबाइल सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड और चार्जिंग बताने में। फिर एक ड्यूटी ने बोला, अगर उसका एक ड्यूटी ने क्वेश्चन पूछा, प्रभु आजकल लोग अलग अलग पूछते हैं, प्रभु सेकंड स्पेस भी होता है मोबाइल में, सेकंड स्पेस कुछ तो होता है। तो बोले सेकंड स्पेस मतलब दो आत्मा एक शरीर में घुस सकते हैं क्या? बोला ड्यूअल सिम भी होता है। मैं बोला अरे प्रभु इतना मत एक्सटेंड करो एनालॉजी को। और मोबाइल जब डेड हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या हो जाता है? मतलब क्या समझना चाहिए, उसको हम रिचार्ज करके फिर से चालू कर सकते हैं। बोला थोड़ा सा ज़्यादा मत खींचो एनालॉजी को वेरी रिस्की बिजनेस है यस प्रभु, यस प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। या वी टॉक्ड अबाउट द ड्रीमिंग स्टेट। सो ड्रीमिंग स्टेट में क्या होता है कि हम जैसे फिजिकली सेम प्लेस पे होते हैं बट वी एक्सपीरियंस डिफरेंट प्लेस, हम डिफरेंट जगह पे जाते हैं एंड वी आर वर्किंग समथिंग लाइक दैट वी एक्सपीरियंस। सो सोल के लिए भी कहा जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए ड्रीमिंग ड्रीमिंग वर्ल्ड। तो सोल जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिजिकली फॉल डाउन इधर होता है या फिर नहीं होता, मतलब फिजिकली वो उधर ही है, इधर जस्ट ड्रीम कर रहा है? एक दो उसका फिजिकली तो फॉल डाउन हुआ है ब्रो जी, फिजिकली मतलब वो भगवान से सेपरेट हुआ है, लेकिन मेनली जो सेपरेशन है वो कॉन्शियसनेस का सेपरेशन है। हमारा ऐसा कहा जाता है ना, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब वापस जाता है आत्मा, तो वो विचार करता है कि बहुत कम समय हुआ है, हमें लग रहा है बहुत समय हो गया है, लेकिन वो जस्ट फ्यू सेकंड्स का ड्रीमिंग ही चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कंपैरिजन में। क्योंकि भगवान का विस्मरण, भगवान को भूल जाना, ये एक ड्रीम है। और ड्रीम तो जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो एक ड्रीम लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे जीवन में, और ये सारा मटेरियल वर्ल्ड उसके लिए रचा जाता है पूरा। तो वैसे देखा जाए तो
कोई बड़ा बात नहीं है। तो जैसे प्योर डिवोटी जो होता है वो मटेरियल वर्ल्ड में होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है, उसका एक पैर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक आंखें उधर ही रहती है पूरी, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है। तो ये जो डायमेंशन है, फिजिकल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, डिस्टेंस, क्योंकि सोल को ट्रैवल करने के लिए ऐसा एरोप्लेन, ऐसा नहीं कि इतना माइल्स ट्रैवल करना पड़ेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए, वो इमीडिएटली पहुंच जाता है, फ्यू सेकंड्स भी नहीं, इच्छा करे और पहुंच जाता है। दैट इज अ पावर ऑफ सोल ऑल्सो। तो ये जो हम मटेरियल कैलकुलेशन जो बता रहे हैं कि मटर फिजिकल कितना डिस्टेंस है, तो ये समझाने के लिए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत ऊपर है, मटेरियल वर्ल्ड बहुत नीचे है, एकदम लोएस्ट प्लैनेट में आता है, तो ऐसा वो बताने के लिए। लेकिन सोल एक बार प्योर डिवोटी बन जाए, लिबरेटेड हो जाए, तो उसके लिए कोई डिस्टेंस बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली। दैट्स वाई इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा वचसा गिरा। तो इसे ये जो प्योर डिवोटी होता है, लिबरेटेड सोल, उसका एक ही है, उसका जो सब कुछ कर्मणा मनसा वचा गिरा सब भगवान के सेवा में लग गया है, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है। देर इज नो डिफरेंस, हियर रह के भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है वो, लाइक दैट। सो तो या एट ए फॉल टाइम डाउन तो वो हुआ है, फॉल डाउन तो हुआ है, मटेरियल बॉडी मिला है, इनकारनेशन हम्म, आया है, फ्लैश मिला है, तो उसका फॉल डाउन तो हुआ है, बिकॉज उसका कॉन्शियसनेस पोल्यूट हो गया है, उसका फॉल डाउन तो हुआ है। तो एट दिस मोमेंट मतलब सोल इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। या बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ का। यस। ओके, थैंक you very much, Prabhu. So we'll meet next time. So next time somebody else. Prabhu, also you have made accountability groups. Tejas Prabhu. Yes, Prabhuji, devotees have messaged means from Okay. self, but I ठीक है। have not checked that all are covered or not. I will Okay. check So and tomorrow, next time post. you display also TPT हाँ, और yes, board में yes. कि these are the accountability and this is accountability leader. This one devotee is accountability leader, like that. So that will give them some sort of assignments will give to them also, so that Yes, they can yes. relish. So one assignment, which one very beautiful assignment which I have is, because all of you do some hearing of Srila Prabhupada lectures and Maharaj lectures, Guru Maharaj lectures, so you hear. So there are some powerful lectures of Prabhupada on this verses of Gita, and generally we miss them. Like this is the best way to study the Gita, because to hear from Prabhupada only. So on every verse Prabhupada has given lecture of Bhagavad Gita, almost majority of the verses, till 7 chapter तो एटलीस्ट सब कुछ है, 7th 8th चैप्टर तक, तो बाकी आगे नहीं है। तो एटलीस्ट हम वो वर्सेस पढ़ सकते हैं, उस वर्स का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के आइए। हम आपको क्या देंगे असाइनमेंट, हर ग्रुप को एक टास्क देंगे, प्रभु आने वाले 6 वर्सेस का आप लोग लेक्चर सुन के आइए, और आपको 5-10 मिनट के लिए हम देंगे कि प्रोपत ने इसमें क्या खास बताया, कुछ अंडरस्टैंडिंग, तो आप उसको डिक्लेयर कर बता सकते हैं, ताकि हमारा प्रोपत का लेक्चर भी कवर हो जाएगा, लाइक दैट। सो दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट विल हैव। हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. हरि बोल।